હલો, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજના દિવસની શરૂઆત અમે પુરી બીચ પર વોક કરીને કરી. વહેલી સવારે 5 વાગે અમે પુરી રેલવે સ્ટેશન પર ઉતર્યા હતા અને ત્યાંથી સ્વામિનારાયણ મંદિર જે રેલવે સ્ટેશનથી લગભગ 1 થી 1.5 કિલોમીટરની દૂરી પર આવેલું છે. બીચ પર વોક કરીને અમે પાછા મંદિર પર આવ્યા, નાસ્તો કર્યો અને હવે અમે કોણાર્ક મંદિર જવા માટે નીકળીશું. ઓડિશા સ્ટેટમાં અમારો 3 દિવસનો ટૂરનો પ્લાન છે, જેમાં અમે પુરી, કોણાર્ક, ભુવનેશ્વર અને કટક સિટી કવર કરીશું. અને એના માટે અમે ટેમ્પો ટ્રાવેલર બુક કરાવેલી છે, જેમાં અમે 3 દિવસ ફરીશું. પુરીથી કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર જવાના રસ્તા પર આવેલું રામચંડી દેવીનું મંદિર કુદરતી વાતાવરણમાં આવેલું શાંત અને ઐતિહાસિક મંદિર છે, જેનો પૌરાણિક વારસો બી રહેલો છે. હવે આપણે રામચંડી દેવીના મંદિર પર પહોંચી ગયા છીએ. મંદિરમાં દર્શન કરીને જસ્ટ બહાર આવ્યા. અર્કક્ષેત્ર કોણાર્કના ઈષ્ટદેવ છે. સૂર્ય મંદિરના નિર્માણ પહેલા રાજા નરસિંહદેવે સૂર્ય મંદિર પરિસરમાં રામચંડી માતાના મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. એક લોકલ દંતકથા અનુસાર ભગવાન રામચંડી તે કાલા પહાડની શરૂઆત કરી હતી, જેમણે 16મી શતાબ્દી દરમિયાન મંદિરનો નષ્ટ કરવા માટે અભિયાન ચલાવ્યું હતું. બીજી એક પૌરાણિક જાણકારી પ્રમાણે દેવી રામચંડીએ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને બતાવ્યું હતું કે રાવણ દ્વારા સીતા માતાના હરણ બાદ લંકા પર વિજય કેવી રીતે મેળવી શકાય. રામચંડી દેવીના મંદિરમાં આપણે માતાજીના દર્શન કરીને હવે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણે કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર આવી ગયા છીએ, જેની એન્ટ્રી ટિકિટ 40 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિ છે, જે તમે ઓનલાઈન પણ બુક કરાવી શકો છો. અહીંયા રાત્રિ દરમિયાન લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પણ થાય છે, જેની ટિકિટ 50 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિ છે. પૂરા ભારતમાં એવા 8 જગ્યા છે જે સૂર્ય ભગવાન દેવ તરીકે પૂજાય છે અને ત્યાં એમના મંદિરો બનાવેલા છે. તેમાંનું આ એક કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર છે. આ મંદિર એક રથના સ્વરૂપમાં છે, જે ટોટલ 24 રથ છે, બંને બાજુ 12 અને દરેક રથમાં 8 પૈડા છે, 8 સ્પોક્સ છે, જે દરેક સ્પોક 3 કલાકનો ટાઈમ બતાવે છે. એટલે આપણે પહેલા 8 પ્રહર હોતા હતા, જે સવારનો, બપોરનો 6 વાગ્યા, 9 વાગ્યા, 12 વાગ્યા, એ દરેકનું અલગ અલગ ક્રિયાઓ હતી. એ પ્રમાણે એમને આમાં પૈડામાં ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. ઇવન એક મોતી બી જે આવેલા છે, જે આપણે વિડીયોમાં આગળ સમજીશું દરેક વસ્તુ. એ એક મોતી જે છે એ 3 મિનિટ બતાવે છે. એ પ્રમાણે ટોટલ 60 મોતી, 180 મિનિટ, 3 કલાક. આ મંદિર 1250માં બનાવવામાં આવ્યું હતું. 1238માં કામ ચાલુ થયું હતું. 1250માં ગજપતિ નરસિંહ જે હતા અહીંયાના રાજા, એમના દ્વારા બનાવાયું હતું અને 1250માં કમ્પ્લીટ થયું હતું આ મંદિર. સો આપણે આ મંદિર જોવા માટે, સમજવા માટે પૂરેપૂરું આપણે ગાઈડ હાયર કરેલા છીએ, તો આપણે ગાઈડને મળીએ. आपका नाम? वनमाली पाड़ी. वनमाली पाड़ी, ओके. लोकल गाइड. लोकल गाइड. आप पूरा ये घुमाओगे हमको? हाँ हाँ. ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. मंदिर का नाम सूर्या मंदिर. कोणार्क का सन टेम्पल वर्ल्ड फेमस. ये मंदिर पूजा नहीं होता, कोई पंडा नहीं. अच्छा, क्यों पूजा नहीं होता बाद में बोलेंगे. अभी आप लोग खड़ा है ना सिंह द्वार में, सूर्या मंदिर सिंह द्वार में अभी आप लोग खड़ा है. सिंह द्वार में एक ही पत्थर में 3 मूर्ति बनाया. देखो एक ही पत्थर में, नो जॉइंट. सबसे नीचे आदमी के हाथी दबाया, हाथी की सर दबाया, एक ही पत्थर में. अच्छा, 3 मूर्ति देने का मतलब ये सूर्या मंदिर को उड़ीसा का राजा बनाया, गवर्नमेंट नहीं बनाया, राजा बनाया. राजा का नाम 3 मूर्ति में
पत्थर में राजा का नाम समझो। हाथी को बोलता है गजपति, आदमी को बोलता है नर, ऊपर में सिंह, गजपति नरसिंह। उड़ीसा का राजा नरसिंह देव राजा ये सूर्य मंदिर बनाया। राजा का नाम है पत्थर में गजपति नरसिंह। राजा को बोलता है गजपति नरसिंह देव राजा। ये कोणार्क का नाम क्यों है? राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर को कोनों में बनाया। ये पूर्व दिशा कोना, कौन में निकले एंगल, सूर्य निकलेंगे कोनों में। चंद्रभागा जगह है ना, चंद्रभागा, यस, यहाँ 3 किलोमीटर दूर में सूर्य का जन्म स्थान है चंद्रभागा। सूर्य का नाम अर्क, कोनो अर्क, कोनो में राजा मंदिर बनाया। सूर्य का नाम अर्क, 2 शब्दों को मिला के कोणार्क, कोनो अर्क। अच्छा, ये पहला सूर्य का पहला किरण मंदिर में गिरेगा सुबह 6 बजे। सूर्य निकलेंगे चंद्रभागा में सुबह 6 बजे, पहला किरण मंदिर में गिरेगा। दिल्ली नाम हो गया सन टेम्पल, अभी भी गिरता है, इसलिए नाम हो गया वर्ल्ड फेमस है सन टेम्पल। सूर्य निकलेंगे चंद्रभागा में, किरण गिरेगा ये मंदिर में सुबह 6 बजे। अच्छा, राजा का नाम बोला नरसिंह देव राजा। 5 मंदिर बनाया, अंदर में 5 मंदिर, ये छोटा बड़ा की 5 मंदिर। नाट्य मंडप, रंग महल, चारों तरफ डांस का पोते देखने मिलता है। ये मंदिर का चारों तरफ डांस है, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, डांडिया, ये अप्सरा है या ये सब डांस है। ओडिशा है ना, डांस का पोज, ओके, पोज है, वो जो है इस नाम हो गया नाट्य मंडप, नृत्यशाला, नृत्यशाला। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये बड़ा मंदिर का नाम होता है जगमोहन मंदिर, जगमोहन। अच्छा, हाइट 127 फीट, जगमोहन मंदिर 127 फीट अच्छा, इसका मतलब, पीछे सूर्य मंदिर 227। ओके, 227। अच्छा, सूर्य मंदिर का ऊपर में मैग्नेट था, चुंबक, राजा लगाया चुंबक। हाँ हाँ, मैग्नेट वेट है 53 टन, 53 टन। ओहो, अच्छा, क्यों लगाया? 800 साल हो गया, मंदिर की उम्र हो गया 800 साल। वो जो मन में सीमेंट नहीं था, 5 मंदिर बना, नो सीमेंट, पत्थर को जोड़ा ना, आयरन क्लिक से जॉइंट हुआ पत्थर, आयरन क्लिक। इसलिए बड़ा मंदिर के ऊपर में मैग्नेट था, 53 टन मैग्नेट को 5 मंदिर को पूरा पकड़ेंगे। आयरन क्लिक ऊपर मैग्नेट, मंदिर को पकड़ने के लिए राजा चुंबक लगाया। अच्छा, समुद्र है ना पास में, समुद्र में जहाज का कंपास काम नहीं किया, ऊपर में मैग्नेट था ना, ओके, कंपास काम नहीं किया, गड़बड़ हो गया, इसलिए मैग्नेट को हटाया। भास्को डी गामा एक आदमी था, पोर्तुगीज, भास्को डी गामा, पोर्तुगीज लीडर भास्को डी गामा, पोर्तुगीज। हाँ, पोर्टुगीज। अच्छा, भास्को मैग्नेट हट गया, उनका जहाज का कंपास काम किया, लोहा का पट्टी लूज हो गया, क्लिप से जोड़ा ना पत्थर को, लोहा का क्लिप लूज हो गया, बड़ा मंदिर का पत्थर गिरना शुरू हुआ, मंदिर टूट गया। अभी टूटा वाला मंदिर है। अच्छा, मंदिर में भगवान था ना, सूर्य मूर्ति, सोने की मूर्ति, इंग्रेज वाला उठा के ले गया, इंग्रेज ब्रिटिश लोग, यहाँ का मूर्ति अभी लंदन म्यूजियम, टूटा वाला मंदिर है, इसलिए पूजा नहीं होता। चप्पल, मोबाइल, कैमरा, एंट्री। अच्छा, ये लास्ट में देखेंगे सूर्य का 2 पत्नी, छाया, संध्या, लास्ट। अच्छा, ये मंदिर को राजा नरसिंह देव ने 1238 में बनाया, 1238, 1250 खत्म, 12 साल लगा। 12 साल में 5 मंदिर कंप्लीट। 12 साल में राजा का 40 करोड़ सोना मुद्रा खर्च हुआ, वो जमान में 40 करोड़ सोना मुद्रा, 40 करोड़, हाँ, वो जमान સોનાની મુદ્રા ખાલી 40 કરોડ, सोना मुद्रा, એટલે એક મુદ્રાનું 10 ग्राम। हाँ, अच्छा, ये 12 सौ कारीगर 12 साल में बना दिया मंदिर को, 1200 कारीगर 12 साल। ये कारीगर के लिए रोसई साला, बोर्ड पड़ी है, बोर्ड, ओके, किचन लिखा है ना, किचन। हाँ, अच्छा, पानी पीने के लिए वाटर, ये वाला रसोई रोसई घर, ये कुआ पानी पीने के लिए, कारीगर के लिए 1200 कारीगर, बराबर, कुआ, किचन। हो गया, भगवान पहले था पूजा के लिए, ब्राह्मण लोग को चंदन घसेंगे पूजा के लिए, चंदन यहाँ पे चंदन की बड़ा बड़ा पत्थर में, एक ही पत्थर है, ओके। और यहाँ ब्राह्मण लोग को बैठेंगे, मंडप है, मंडप। ओके, अच्छा, ये राजा बनाया ना, ये मंदिर ने, ये सूर्य रात है, रात बना दिया, ओके, पूरा रात बना है। दिया। वो साइड में चक्र देखे ना, 12, हाँ, 12 चक्र वो पे साइड में पूरा, 12, 24, ओके, 24। ओके, और 7 घोड़ा सामने डैमेज हो गया, 7 घोड़ा डैमेज, ओके, 7 घोड़े जो है वो 7 अपने 7 कलर, वार, सूर्य का 7 हाँ, कलर होता है ना, ये 7 सूर्य कलर, मंदिर है, हाँ। फिर 7 अपने वार, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी, हाँ, 7 हाँ, अच्छा, समझो ये सूर्य का 7 कलर होता है, 7 घोड़ा, 7 डेज। अच्छा, ये डांस होता है ना सामने, हाँ। ये रात का सामने डांस होता है, डांस, ओके, ये पूरा रात बनाया राजा। अच्छा, ये 12-12, 24 चक्र रात का काम करेंगे, घड़ी का काम करेंगे। हाँ। वो जमान में घड़ी नहीं था भैया, हेलो सर, ये वो जमान में घड़ी नहीं था, ये सूर्य घड़ी है। अभी टाइम मिलेगा ना चक्र में, हाँ, वो साइड में दिन का टाइम है, वो साइड में रात का, ओके, नाम होता सूर्य घड़ी। सूर्य है तो टाइम मिलेगा, सूर्य नहीं टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बताएंगे चक्र के पास में। आइए, जो ये मंदिर की उम्र हो गया 800 साल, हाँ, 800 साल हो गया ना। समुद्र हवा इधर आता ना, नमक हवा, तो पत्थर नष्ट हो जाता ना समुद्र हवा में। हाँ, अच्छा, सादा पत्थर गवर्नमेंट बाद में जोड़ा, बाद में, ओके, ये लाल वाला सादा वाला देखा ना, बाद में जोड़ा। बराबर, अच्छा, पहले डिजाइन अभी नहीं होगा, पहले डिजाइन राजा बनाया, बाद में गवर्नमेंट बनाया। हाँ, ये गेट बंद, गवर्नमेंट बंद किया। हाँ, गेट, तीनों गेट बंद हुआ, तीनों गेट, सिंह द्वार, अश्व द्वार, गज द्वार, जीवन चक्र, जीवन चक्र। आदमी का 24 घंटा का काम है इसमें, जीवन चक्र। अच्छा, एक मोटा स्पोक देखना, मोटा वाला स्पोक, हाँ, ये 3 घंटा, ये 3 घंटा फर्क, 8 स्पोक है ना, 8 तरीके 24 घंटा का काम इसमें है। आदमी का 24 घंटा का काम मोटा मोटा स्पोक में दे दिया, ओके, जीवन चक्र।
अच्छा समझो, सुबह रानी उठा ना, योगा किया, सुबह का काम योगा, योगा के नीचे स्नान करके जा रहा हूँ, स्नान, उनका नीचे घोड़ा लेके जा रहा हूँ शिकार करने के लिए, पूरा नीचे आईने में मेकअप, योगा मेकअप, दिन का काम हो साइड में, रात का काम हो साइड में। ओके, जीवन चक्र हो गया, 8 तरीके 24 घंटे का काम इसमें है, जीवन चक्र। 8 प्रहर का। हाँ, असल मंदिर ये सूर्य मंदिर टूटा वाला, पीछे वाला, ये जगमोहन 127 फीट, ये 227। अच्छा, ऊपर में मैग्नेट था ना, 53 टन मैग्नेट भास्कर डी गामा हटाया, मंदिर डैमेज। अच्छा, सोने की मूर्ति, इतना बड़ा मूर्ति अंदर में था सोने के, वो सूर्य मूर्ति ओके, चोरी हो गया, अंग्रेज वाला लिया। ये पत्थर का नाम ग्रेनाइट, सूर्य मूर्ति ग्रेनाइट, ओरिजिनल है, इतना बड़ा चोरी हो गया। अच्छा, ये 6 नंबर चक्र का मीनिंग है ना, 6 नंबर अशोक चक्र। अशोक चक्र अभी आपके पास है ना, 10 रुपए में, 10 रुपए नोट में, अब 20 रुपए नोट में। ओके, चक्र अभी आपके पास न्यू वाला 10 रुपया, ओल्ड वाला 20 रुपया। अच्छा समझो, मोदी आया था ना, मोदी, ये चक्र में फोटो उठे G20 में, G20 देखा आप लोग, G20 में चक्र, 10 रुपया नोट में, 20 रुपया नोट में। हाँ, ये है ना, लोहा का पट्टी से पत्थर को जोड़ा ना, लोहा का क्लिप, साइड में देखा रहा, लोहा का क्लिप, आगे बढ़ो। 800 साल का लोहा रस्ट नहीं होता, जंग नहीं लगता, इसीलिए ऊपर था मैग्नेट, मैग्नेट था लोहा का पट्टी। भीतर कहीं पहुंचो। अच्छा, ये सब सूर्य घड़ी, 12 चक्र, हर चक्र में टाइम मिलेगा, हर चक्र में टाइम, सेम टाइम। अच्छा, सूर्य है तो टाइम मिलेगा, सूर्य नहीं टाइम नहीं मिलेगा। अभी सूर्य है ना, सूर्य सुबह से निकलेंगे पूर्व दिशा में, सुबह 6 बजे, तो आपका छाया इधर गिरेगा ना, सुबह का छाया, सूर्य 6 बजे निकलेंगे सेंटर में, हर चक्र में सेंटर में ऐसे छाता लगेंगे ना, सेंटर में, ये छाता का छाया इधर जाएगा, 6 होगा, सुबह का 6, मोटा वाला 6, 7:30, 9, 10:30, 12, आंटी क्लब नीचे टाइम, नीचे 12, भगवानगढ़ में नीचे 12, 12, 1:30, 3, 4:30, संध्या 6, सुबह 6, 12, आंटी क्लब नीचे टाइम। अच्छा, गोली मिनट काम करे, एक बॉल 3 मिनट, ओके, एक बॉल 3 मिनट का काम। 3 मिनट। अच्छा, 6, 9, 3 घंटा, 60 गोली है ना, 60 गोली, ओके, 180 मिनट। अच्छा, अभी छाता लगे ना सेंटर में, छाता का छाया देखो, इधर गिरे ना। अच्छा, इधर सीधा गिरेगा तो 12 होगा, सीधा नहीं गिरा, अभी थोड़ा बाकी है, 12 बजने के लिए 20 मिनट की 18 मिनट बाकी है, 20 मिनट की 18 मिनट बाकी है। हाँ, 12 नहीं हुआ, 20 मिनट की 18 मिनट बाकी है, 12 बजने के लिए, समझ गया। छाता का छाया देख लो, छाता का छाया देखा ना, थोड़ा पीछे। हाँ पीछे। अच्छा, इधर आ जाएगा, देखो इधर आएगा, 12 होगा। ये छाता का छाया देखा ना, छाता का छाया, ये जो जॉइंट है ना, पत्थर का जॉइंट, ये होता है 12 बराबर। हाँ, ये जॉइंट के पास आ जाएंगे, 12 बजेंगे। अभी तो 12 बजने के लिए 16-17 मिनट बाकी है ना। सूर्य मंदिर टूट गया, सूर्य का 2 पत्नी का मंदिर टूट गया। पीछे देखो, सूर्य का 2 पत्नी, छाया, पीछे संध्या। ओके, पीछे उसके ये सामने वाला छाया देवी, पीछे संध्या। ओके, अच्छा, छाया देवी का बेटा के नाम शनिदेव, शनि भगवान। आज के शनिवार है ना, छाया का बेटा, संध्या का बेटा जमराज, जो जान लेता है। अच्छा, दोनों बेटा सूर्य का, दोनों डेंजर बेटा। अच्छा, बेटी जमुना, सूर्य का बेटी जमुना नदी दिल्ली में, वो साइड में दिन का घड़ी, रात का घड़ी। दिन में सूर्य है तो टाइम में बता दिया, रात में चंद्रमा आएगा, टाइम मिलेगा, चंद्रमा घड़ी वो साइड में। मंदिर बनाया, ये पत्थर से आया ना, पत्थर खंडगिरी पहाड़ से राजा लगा, खंडगिरी भुवनेश्वर 65 किलोमीटर। अच्छा, वो जमाने में गाड़ी मोटर नहीं था, बैलगाड़ी में राजा पत्थर लगा, बैलगाड़ी खंडगिरी भुवनेश्वर से आया बैलगाड़ी में, और रास्ते में खाना बनाया, इतना दूर से आएगा ना, रास्ते में खंडगिरी के, उदयगिरी के, वहाँ से लेके आया, भुवनेश्वर भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर में बैलगाड़ी में आया ना, रास्ते में खाना बनाया। ओके, डबल चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, ये लड़की मसला कुटता मसला, इसीलिए राजा का 40 करोड़ सोना मुद्रा खर्च हुआ, 12 सहकारी करो, 12 साल बैलगाड़ी में पता रहा, खंडगिरी पहाड़ भुवनेश्वर। आजा, पत्थर गिरना शुरू हुआ ना, अंदर में बालू भर दिया 1903 में। ओके, इसीलिए मंदिर नहीं टूटा, नहीं तो पत्थर गिरना शुरू हुआ, सपोर्ट लगे ना, सपोर्ट, पत्थर गिरना शुरू हुआ, अंदर में बालू भर दिया घर में 1903 में। જેમ મંદિર બનાવ્યું છે સૂર્યદેવનું, એમ સૂર્ય ભગવાનના 2 પત્ની હતા, છાયાદેવી અને સંધ્યા. તો એમના બી મંદિર બનાવવામાં આવ્યા છે. જસ્ટ મંદિરની એક્ઝેક્ટ પાછળ છાયાદેવીનું મંદિર આવેલું છે અને એની પાછળ સંધ્યાદેવીનું. જે આ મંદિરનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, આ જે છે વર્તમાન સ્વરૂપમાં, એનાથી બી વધારે આ પાછળવાળું જે ખંડિત પાર્ટ દેખાય છે, હા, એ ડબલ હાઇટનો હતો. એની ઉપર લોહી ચુંબક મૂક્યું હતું ને એની ઉપર કળશ હતો. લોહી ચુંબક હટી ગયું, કળશ પડ્યું અને મંદિરમાંથી પથ્થરો પડવા માંડ્યા. ટોટલી મંદિર ખંડિત થઈ ગયું.
આપણે સૂર્ય મંદિરની વિઝિટ કરી લીધી. હવે ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા જે અર્ક ક્ષેત્ર કરીને મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સન ટેમ્પલની હિસ્ટ્રી વિશે બી શોર્ટ ફિલ્મ બતાવવામાં આવે છે અને ઇવન મંદિરની રેપ્લિકા બી અહીંયા મૂકેલી છે. તો હવે આપણે એ જોવા જઈશું. આ મ્યુઝિયમની ટિકિટ 50 રૂપિયા છે. મ્યુઝિયમમાં તમને ભારતમાં આવેલા 8 સૂર્ય મંદિરના સ્થાન અને તેમની ફોટો જોવા મળશે. તેમજ આ મ્યુઝિયમમાં ઓડિશામાં આવેલા પ્રાચીન મંદિર વિશે પણ અહીંયા મંદિરના ફોટો સાથે ટૂંકમાં માહિતી આપવામાં આવી છે. તે મંદિરના સ્થાન વિશે અને તેની ભવ્યતા વિશે બી જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમજ શોર્ટ ફિલ્મ દ્વારા થિયેટરમાં તમને મંદિરની હિસ્ટ્રી, કેમનું બાંધવામાં આવ્યું, ક્યારે પૂર્ણ થયું, તેની ખંડિત થવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ અને અત્યારે કઈ કન્ડિશનમાં છે, એ બધું તમને શોર્ટ ફિલ્મમાં અહીંયા જણાવવામાં આવે છે. पुस्तक मांगला भांजी और बाया चक्रा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में लांगुला नरसिंह देव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था. नरसिंह देव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की આ મ્યુઝિયમમાં તમને સ્કલ્પચર્સ અને મૂર્તિઓ પણ જોવા મળશે. આ મ્યુઝિયમમાં તમને ઓડિશા રાજ્યની હિસ્ટ્રી તેમજ તેના રાજાઓ, રૂલર્સ વિશેની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે. તેમજ સૂર્ય મંદિરની સ્મોલ રેપ્લિકા, તેનું આર્કિટેક્ચર જે બતાવે છે કે રિયલમાં તે સમયમાં સૂર્ય મંદિર કેવું દેખાતું હતું, તેની ભવ્યતા, હિસ્ટ્રી, જિયોગ્રાફી તેના વિશે પણ અહીંયા જાણવા મળે છે. હવે આ બંને વિઝિટ અહીંયા કોણાર્ક સૂર્ય મંદિર અને મ્યુઝિયમ જોઈને હવે નેક્સ્ટ આપણું છે ચંદ્રભાગા બીચ ઉપર જઈશું. હવે ચંદ્રભાગા બીચ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. ચંદ્રભાગા બીચની જોડે વિશાળ પાર્કિંગ આવેલું છે અને ખૂબ જ બહુ બધી ફૂડ ઇટરીઝ પણ આવેલી છે, જ્યાં તમે લંચ, બ્રેકફાસ્ટ કે ડિનર કરી શકો છો. હવે આપણે ચંદ્રભાગા બીચ ઉપર આવી ગયા છીએ, જે કોણાર્ક સન ટેમ્પલથી લગભગ 3 થી 4 કિલોમીટરની દૂરી ઉપર જ છે. પહેલી નજરે જે દરિયાનું વ્યૂ આપ એકદમ ચોખ્ખાઈ અને એકદમ રમણીય દરિયાકાંઠો છે. દૂર દૂર સુધી એકદમ પ્રોપર બીચ ફોર્મમાં આવેલો છે આ, અને પબ્લિક અહીંયા એન્જોય કરી રહી છે, નાહી રહી છે. ઇવન બોટિંગ એક્ટિવિટી, બીજી વોટર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી બી અહીંયા થાય છે. બરાબર, તો આપણે એકાદી વોટર સ્પોર્ટ એક્ટિવિટી કરીશું અને થોડો આનંદ માણીએ દરિયાકાંઠાનો. ચંદ્રભાગા બીચની વિઝિટ કરીને હવે અમે સ્વામિનારાયણ મંદિર પાછા આવી ગયા. અમે ત્યાં લંચ કર્યું અને થોડોક આરામ કર્યો. સાંજ દરમિયાન અમે ફરીથી પૂરી બીચ વિઝિટ કરી. જગન્નાથ મંદિરમાં ભગવાન શ્રી જગન્નાથના દર્શન કરવા માટે હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ. જય જગન્નાથ મિત્રો, અત્યારે આપણે મંદિરમાંથી દર્શન કરીને બહાર આવ્યા અત્યારે જસ્ટ, અને મંદિરમાં મોબાઈલ કે કંઈ અલાઉ નહોતું, બહાર જ મુકાઈ દેવડાવતા હતા, એટલે કોઈ શૂટિંગ કે કોઈ કરી ના શક્યા. મંદિરની વાત કરીએ તો આપણા હિન્દુ ધર્મમાં જે 4 મેન ધામ કહેવાય છે, એમાંનું આ એક ધામ છે. હવે આ વિડીયો તો મારો મીન્સ કે આ ટૂર તો ફર્સ્ટ છે બ્લોગ, પણ અમે લોકો બદ્રીનાથ,
દ્વારકા અને રામેશ્વરમ ઓલરેડી જઈ ચૂક્યા છે અને જગન્નાથ ભગવાનનું મંદિર જગન્નાથપુરી એ એકચ્યુઅલી કળિયુગનું ધામ કહેવામાં આવે છે અને એનું જે છે એમાં મૂર્તિ કોઈ પથ્થરની કે કોઈ ધાતુની બનેલી નથી, જસ્ટ એક લાકડામાંથી બનાવીને ભગવાનની મૂર્તિમાં બનાવવામાં આવેલી છે. અને દર વર્ષે આપણે અમદાવાદમાં જે રીતે થાય છે અને બીજા ઘણા શહેરોમાં એ રીતે અહીંયા દર વર્ષે રથયાત્રા નીકળે છે.